Hello children, I Ritika, Sharma, teacher of Ambi International School, Nayagaon, Kota. So today we will read a story in this chapter which name is The Quest for Food. It's your chapter 2 in English textbook. So students, you are alone at home and you don't find anything to eat in your refrigerator. So what you will do? Of course, you cook something or you can search for something. Exactly, in this extract, we will read that how a writer मतलब कि रॉबिन्सन क्रूसो जो चैप्टर है वो रॉबिन्सन क्रूसो का ही है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उनका एक एक्सट्रैक्ट है, उनके बुक का एक एक्सट्रैक्ट है. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट दैट हाउ ही सर्वाइव्ड ऑन अ आइलैंड. उन्होंने किस तरीके से एक आइलैंड पे सर्वाइव किया. This is an extract adapted from the book Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Robinson Crusoe was shipwrecked on a deserted island. See, this extract is taken from the book Robinson Crusoe and adapted by Daniel Defoe. Robinson Crusoe was shipwrecked on a deserted island. He was stuck on an island. His ship was stuck on an island. To survive on this island, he learned to hunt and build a shelter. This is his story in his onward. The need for see, here's the story is begin. The need for meat kept me going. जो वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई ग्रेन नहीं था, वहाँ पे कोई खाना पीना तो नहीं था. सो द नीड फॉर मीट केप्ट मी गोइंग. आई ट्राइड टू कीप अ डॉग. उन्होंने एक डॉग को भी एज अ पेट रखा, बट ही वॉज नो यूज. उनके लिए इसका कोई यूज़ नहीं था. ही वॉज अफ्रेड ऑफ द गॉड्स एंड केप्ट रनिंग बैक टू मी. द गॉड्स ऑफ माई आइलैंड वर वेरी हार्ड टू कैच. that gods of that island was very hard to catch. मतलब बहुत ही मुश्किल से वो पकड़ने में आती थी. I finally caught a little one and as time went by I caught another. और धीरे धीरे जैसे कि डे बाय डे जैसे कि टाइम ख़त्म होता गया तो उन्होंने गॉड्स को कैच करना स्टार्ट कर दिया. इट वॉजेंट 2 or 3 years बिफोर आई हैड मैनी. ये कोई 2 या 3 years नहीं था. इट वॉज so many years. वहाँ पे बहुत सारे years उन्होंने spend किए. He had spent a lot of years, many years. But at last, I not only had enough gods to give me milk, but I could also kill one for meat whenever I needed to do so. So उनका जो भी survive होता था, मतलब कि जो खाना वगैरह होता था वो सिर्फ और सिर्फ गॉड से होता था. उनको मिल्क भी गॉड से मिलता था एंड उनका जो मीट होता था वो भी उनको गॉड से ही मिलता था. What I needed the most was something to replace both the bread and the flour. My supplies on the the bread and the flour was reducing very fast, which were on the ship. जो ship में चीज़ें लेकर आए थे वो अपने साथ, वो सब कुछ ख़त्म होती जा रही थी. And I needed cereal to keep myself alive. I made a big dry cave my home on the island. He made a shelter for him. He made a dry cave. It was very dark and dingy. It was very dark and full of dust. And the fact that I had no candles did not help either. So what he did, I used the fat from the goats and dipped whatever cloth I found. So he found a piece of cloth and उन्होंने उसको एक wood पर tie up किया and he dipped into a goat's meat. Setting this fat-soaked cloth afire served the purpose of candle, and he set the fire on that cloth, the fat-soaked cloth. Okay, so that's how the purpose of candle was fulfilled. As I hunted for a piece of cloth, जैसे कि वो जो cloth को find out कर रहे थे, he came upon a big bag in which we had kept grain on board the ship. So he found out a bag in उसमें क्या रखा हुआ था, वो उन्हीं के शिप से निकला हुआ था, उन्हीं का ही था वो बैग. सो उसमें क्या रखा हुआ था? इट वॉज जस्ट द काइंड आई नीडेड. उसमें वही सारी चीज़ें थी जिनकी उनको ज़रूरत थी. आई टुक इट आउट एंड डस्टेड इट आउटसाइड माई केव. आई थॉट नो मोर अबाउट इट अंटिल वन डे. ही वॉज थिंकिंग दैट he couldn't live more. अब वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगे. So I saw some little plants growing beside the entrance to my cave. सडन उनको वो बैग मिला और उस बैग में क्या था, कुछ सीड्स थे, अलग अलग तरह के सीड्स थे.
So he decided to grow little plants. On taking a closer look, I realized that they were corn plants. उन्होंने ज़रा नज़दीक से जाके उन सीड्स को देखा, उन प्लांट्स को देखा, तो उनको क्या लग रहा था? That were corn plants. There were some barley and rice plants as well. वहाँ पे rice plants भी grow हो रखे थे. A few seeds must have been left at the bottom of that bag. जैसे ही उन्होंने वो बैग निकाला तो वो जो seeds थे वो वहाँ पे थोड़े रह गए थे, जिसकी वजह से plants grow हो गए. I had to look after these plants, saving every bit of grain from the birds. उन्होंने he started to look after their plants and उन्होंने birds से भी उन grains को बचा के रखा हुआ था. It took me 4 years before I had grown enough grain to eat. मतलब it's a very long time. उनको at least 4 years लग गए थे ये सब कुछ करने में, लाइक ग्रो करने में प्लांट्स को और उनकी देखभाल करने में. आई हैड फर्स्ट लैंडेड नियर ए स्मॉल स्ट्रीम. उसके बाद वो एक स्ट्रीम उनको दिखी, छोटी सी स्ट्रीम उनको दिखी. एज आई वॉकड अप द स्ट्रीम, जैसे ही वो उस स्ट्रीम की तरफ गए, आई फाउंड अ लश ग्रीन फील्ड्स ऑफ ग्रास. उनको बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी दिखी, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन फील्ड्स उनको नजर आए, एंड शुगर कैन ऑल्सो. Further up, I found some melons on the ground and grapevines. He found what he wanted. I found some melons on the ground and grapevines growing on trees. They were heavily laden with bunches of grapes. वहाँ पे melons थे, वहाँ पे grapevines थी, और वो जो grapevines थी वो पूरी की पूरी grapes से भरी हुई थी. I recalled that grapes could be dried and preserved as raisins. जो उनको याद आया कि अगर ये जो grapes है उनको हम ड्राई करके थोड़े टाइम के लिए रख दें तो वो किस में कन्वर्ट हो सकती है? raisins मीन्स किशमिश में वो कन्वर्ट हो सकती हैं. With this thought in mind, I picked the biggest bunches I could find and tied them to the outer branches of the trees to be sun dried. So he took a lot of bunches of grapes and उन्होंने sunlight में रख दिया ताकि वो dry हो जाए. I dried more than 200 big bunches this way. Each night when I went back to the cave, I would carry many limes and bags. जब भी वो अपने केव में लौट कर आते थे तो वो बहुत सारे लाइम्स लेकर आ जाते थे अपने बैग में, made of sailcloth. It was a long, dreary walk with the weight of the limes pulling me down. ये बहुत ही ज़्यादा tired हो जाता था उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती थी उनको, but he had no other choice. He had to do this because of he had to survive on that island. But survival was the only thing on my mind. One day I found that my grapes were well dried. I carried them home to my cave. वो उनको अपने cave में लेकर आ गए. It was a good decision. For the next day a big storm came up. बहुत ही अच्छा डिसीजन था उनका, बिकॉज अगर वो उसको लेकर नहीं आते तो वो जो स्टॉर्म आया था वो उसके साथ ही सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता, खत्म हो जाता. The winds blew very hard and my raisins and efforts would have all been lost. उनके सारे efforts खत्म हो चुके होते, बट उससे पहले वो अपने जो उन्होंने रेजिन्स वगैरह ग्रेप्स को ड्राई करने के लिए रखा था वो अपने केव में लेकर आ गए थे. I kept the raisins, lime and meat at the back of my cave. This was the coolest area and the best place to store the supplies. I sat at my table, वो अपने टेबल पे बैठ गए, and read my Bible by the light I had made. उस लाइट में जिसको उन्होंने बनाया था. See, this is how he survived on that island. So here's the chapter. So here's the end of your chapter.